आप कुछ करो ना करो, जस्ट बी रियल, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स अपार्ट इट, एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस द मोमेंट यू आर रियल. आपको गुस्सा आता है आप करो, यू डोंट हैव टू बी पॉलिटिकली राइट ऑल द टाइम, यू डोंट हैव टू बी, it is not that way. If I'm supposedly, I have come across actors like that, like co-stars हैं मेरे ऑन स्क्रीन, जैसे उनका बैक है मेरा फ्रंट है, तो उनके शोल्डर से हमारा होता है, क्यों देना, लाइक. स्वागत है मैम आपका डेली चक्कर पर. सबसे पहले तो कैसा रहा योर एक्सपीरियंस वर्किंग अनोखा बंधन, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि इट्स वन ऑफ दो सीरियल्स जहाँ पर एक लड़की की कहानी नहीं थी, मुझे लग रहा है परिवार की कहानी थी, एक माँ की कहानी, एक सास की कहानी, एक बेटे की कहानी. वाज योर एक्सपीरियंस? इट वॉज़ ब्यूटिफुल, बहुत ही शॉर्ट था लेकिन बहुत ही खूबसूरत जर्नी रहा अनोखा बंधन का. शॉर्ट बट वेरी ब्यूटिफुल जर्नी. एंड येस यू ट्रू, बहुत सच कहा आपने कि एक ऐसी कहानी थी जिसमें सिर्फ हीरोइन ही नहीं बट कि सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट थे. वो सास भी इम्पॉर्टेंट थी. एक माँ और बेटे की कहानी थी, एक सास और बहू की कहानी थी, एक सास और सास की कहानी थी, मतलब मेरी जो सास बनी थी उसकी और मेरी भी कहानी थी. तो बहुत ही प्यारा सा एक सफ़र रहा, बहुत ही अनोखा सा एक बंधन था ये. सो टूट गया. हाल ही में पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट यू तब जब कृष्णा अभिषेक का एक इंटरव्यू वायरल हुआ, वेयर कृष्णा टॉक्ड अबाउट फिल्म जो उन्होंने आपके साथ की थी, विच वेंट सुपर हिट. इन दैट फिल्म ही वाज ऑन व्हील चेयर. सो डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ मेमोरी लाइक दिस विद कृष्णा? Of course, of course. I mean, Krishna और मैं, we were like, since we, it was very nice chemistry we had. Like too much of मस्ती, मजाक मस्ती. उस वक्त मेरी मम्मी भी मेरे साथ सेट पे जाती थी, तो वो मम्मी के साथ मस्ती करता था. तो एक आध बार वो मेरे घर पे आए थे हमसे मिलने, और उसके बाद मेरी नानी से भी मस्ती करता. तो ही वॉज वेरी वेरी नॉटी एंड अ वेरी प्लेफुल बॉय, कृष्णा. सो जहाँ पर भी होगा हमेशा से हर किसी के साथ मस्ती करता था वो, विथ ही हैड अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर अराउंड. सो काम के टाइम पे काम एंड मस्ती के टाइम पे मस्ती, हंसी मजाक. तो कैसे हमारा शूट कंप्लीट हो गया पता भी नहीं चला. इट वाज ही इज टॉकिंग अबाउट द फिल्म कॉल्ड सुहाग. सो बहुत ही खूबसूरत सा, इट वाज अ रीमेक ऑफ फूल बने अंगारे. सो अमेजिंग. नॉर्मली हीरोज दे डोंट डू सच काइंड ऑफ फिल्म जहाँ पर हीरोइन टेक्स अ फ्रंट सीट और द फ्रंट रो. So, but he being a good hero, and he knew that what is he doing, and he was so good and so supportive for that film, that in spite of he being on the wheelchair and the heroine is doing all the actions. So but he was so progressive, his thoughts were so progressive that he did that film. Yeah, and today when you see Krishna and his success, do you recall those days when he used to struggle and आप लोग के, और उस वक्त आप ऑलरेडी स्टार बन चुके थे, you were an established name at that time. How you used to see तब कृष्णा को and today how you used to see him? He is always very humble. हमेशा से वो हम्बल रहा. अभी जस्ट बीच में लास्ट ईयर आई थिंक आई मेट हिम फॉर OTT प्लेटफॉर्म के लिए, बट इट डिड वर्क आउट. आई मेट हिम ब्रीफली फॉर उससे मीटिंग थी. he is still the same. He's still so humble, he's still so generous, he's still so, that his smile, उसकी जो मुस्कान, that baby like smile of his, he's still the same. He's not changed a bit. So that's what I think is the secret behind his success. That success did not come to his head. So he's so down to earth person still. Okay ma'am, I really want to ask, I personally wish to ask this to you कि OTT आने से ना बहुत सारे कलाकारों को एक नई उम्मीद मिली है, एक नया स्कोप मिल गया है, बहुत सारे लोगों को एक नया जन्म ही मिल गया है, if I'm not wrong. What in terms of you, are you getting those amount of job? Are still people हैं जो टैलेंट की कदर कर रहे हैं, they look upon, या फिर वो वाली मेंटेलिटी आज भी लोगों के पास है कि अरे नहीं यार भोजपुरी वाले? नहीं, आई थिंक सो दैट हैज़ चेंज. सो बिकॉज बहुत अच्छे, आई मीन दिनेश जी ने अभी किया हुआ है भोजपुरी, आई मीन OTT किया हुआ है. दिनेश जी ने बहुत अच्छा वेब शो किया हुआ है.
तो देर आर मैनी पीपल हु आर कमिंग, ऐसी बात नहीं है. सी, जो लोग टैलेंट की कदर करते हैं वो टैलेंट की ही कदर करते हैं. फिर वो ये नहीं देखते हैं कि आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं या आप कौन से जॉनर आपने किया है. अगर आपके किरदार में वो टैलेंट फिट हो रहा है या वो किरदार फिट हो रहा है, देन दे विल कास्ट यू no matter what. And there are people who are like that ma'am, you're very good ma'am, we really like you as a performer, but we need someone a little more famous or someone who has a little more followers. How many followers do you have? So there are people who are like that also, but there are the casting directors who are casting just on the basis of talent. So there are two sides of it. So I'm still waiting for that right casting. कोई सिली रिजेक्शन हुआ है? मैं तो बोल ही रही हूँ. Yes, yes. Ma'am, how many followers do you have, ma'am, on Insta? I said my 20 years plus career is going to be decided by the followers that I'm going to have on social media. Wow. This shows how good casting. Yes. Then I said, then you don't know. I said, boss, you need to really go on social on the correct medium, social media. That's, please Google me. Please see my Wikipedia, see the body of work that I have done, and then please, you want to take an audition for the character, I'm ready to give, no issue. But please don't ask me. It really hurts. It's like an insult to me on my face. Which project was that कि ये हाथ से निकल गया? Any project and which is doing good? या There फिर are many. There are a couple of 2-3 projects that जिस वजह से मेरे हाथ से निकला है. जैसे if you can just I name don't it. want to name them. You don't want to. क्योंकि आगे भी काम करना, you have an aspiration. Yeah, of course. And it's not right. You know, it's not right to just name like that. Because क्या होता है कि जो मेरे behalf पे जिसने काम किया है, you're like pinpointing on that particular character, on that particular artist also. तो किसने किया था आपको रिप्लेस? वो याद होगा. Are they that popular on social media? They are, of course, they have in millions, they have followers in millions, but as an actor, They are not that senior. yeah, they are not. How does it feel when people treat like this? और क्योंकि अभी OTT पर भी हुआ ना ये social media influencers की वजह से. रणवीर शौरी सर थे, few influencers sitting to a different area of the house and talking like कौन है ये, हम तो जानते भी नहीं है इनको. So sometimes does it make you feel very sad that they don't know anything about it? Yeah, exactly. See, it is, you know why it makes me sad is that your vision has become so small. Your vision, you don't know anything beyond social media. आप जानते ही नहीं हो. You're living in a very fake world. You're not living in the real world. Come out of social media. There's a life beyond social media. Social media is important to an extent that I can connect with my audience. It's a nice way of connecting, but people comment on your work. People, if you see, I'm not very active on social media still. It's only when I want to put up something, or when I really in that pretty much lets me just put up a reel, or it's that way. It's for my entertainment. I'm not a monkey for you to entertain you all the time. I am doing my work on screen. You please see me on screen. So there is a life beyond social media, which today's generation doesn't know anything about. Anything, it's for their, they eat, it's for social media. They sleep, it's for social media. I think everything is for social media. It's something for real. I live in a real world, and I want to live like that. So I want to know beyond social media, and I am beyond social media. I'm going to be beyond social media. I have lived there, I have lived here, I will live here, and I will be living after this also. So I am there forever. I'm just not for that 3 minutes or 3 seconds in stuff. आपके इस जवाब से आई एम रियली विलिंग टू आस्क, क्योंकि क्या कभी बिग बॉस वालों ने आपको अप्रोच नहीं किया? नहीं, अभी तक नहीं. I am very being truthful, but let's see someday, sometime. Willing to work in ऐसे shows का हिस्सा बनना बिग बॉस? Of course, I want to experience that. Yes, definitely, because it's like it's a mind game, and I want to know whether I'm really strong enough, or do I really have that what do you call instinct
you know, to play that kind of mind game, it's a different ball game, I think, altogether. And Khatron Ke Khiladi, of course, I love Khatron Ke Khiladi because of the fact, because it really challenges your mental strength as well as your physical strength. So it's something, it's there in front of you, but Big Boss is something that it's not there in front of you. You don't know whether you have that instinct in you or no. Yeah, because Ravi Kishan has read, Nirahua has read, Khesari was also a part of it, and Akshara was OTT की हिस्सा थी. अक्षरा के वक्त तक ना, जब तक निरहुआ और खेसारी ये लोग आए ना, तब तक इट वाज अ गेम. लेकिन अक्षरा के आते वक्त ना ग्रुपिज्म होने लगा. Correct. अक्षरा सिंह को ना बहुत डिमीन किया गया था कि तुम नॉर्थ इंडियन हो, तुम भोजपुरी इंडस्ट्री से हो, फैट शेमिंग. But that woman, the way she played, she was like a tigress, fighting all alone. Then cut to, it was Manisha Rani ka season. All of a sudden a girl from, a small town, this, just because she was a YouTuber, she was getting that support and respect at the same time. So what do you feel इन सब की जर्नी देखकर कि इन सब से मैं ये चीज़ सीखूंगी, निरहुआ से मैं ये चीज़ सीखूंगी, रवि किशन से ये चीज़ सीखूंगी. See, मुझे ऐसा लगता है कि it's very important to be real. Just to be Rinku Ghosh. Yes. The most I have always seen that आप अक्षरा से बात करेंगे तो वो ऐसे ही बात करती है. Since she's like that. In real life also she's like that. Manisha Rani, I feel, I don't know her personally, but I think जो भी मैं उसको देख, it's so important to be real. आप कुछ करो ना करो, just be real. That's it. You don't have to do anything else apart it. Everything will fall into place the moment you are real. आपको गुस्सा आता है, आप करो. You don't have to be politically right all the time. You don't have to be if it is something which is disturbing you, it is disturbing you, and be real. That's fine. And I am like that. मैं अपने सेट पे भी अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं होता तो सब सेट में सबको मालूम होता है कि रिंकू को ये चीज़ पसंद नहीं आई, बिकॉज इट इज़ वेरी एविडेंट ऑन अ फेस. So that kind of actress कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए तो ही मैं आऊँगी. नहीं, I'm not a tantrum person at all. वो बिल्कुल भी नहीं है. मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि someone who is not ready with the craft or is taking the acting lightly. अरे acting ही है. It is not that way. If I'm supposedly, I have come across actors like that, like co-stars हैं मेरे ऑन स्क्रीन, जैसे उनका बैक है, मेरा फ्रंट है, तो उनके शोल्डर से हमारा होता है. क्यों देना, लाइक हाँ अब हम यहाँ पर जाएंगे, लाइक नॉट गिविंग मी दैट क्यू प्रॉपरली. So it is irritating. For me that's offensive. You confronted? Yes, I did. Yes. I said, is something wrong with you? I've done it many a times. And that face of mine is not good. I'm just recalling which bichara actor was even. And that face of mine is not good. Trust me, that's a very wrong side of Rinku, which people don't want to experience. But you know what that makes people feel, being a journalist, जब हम कभी set पर जाते हैं, when I see some of the other actor who gives his cue very properly, he knows shoulder है, नहीं दिख रहा है, but the moment he start giving that energy ना, because that's the energy we get. Yeah, so there are actors who were like मेरा हो गया ना, I'm given my time, why do I waste? I don't want सामने वाला का acting अच्छा हो. There are actors also like that, and I just recently I came across, I don't want to name the person, so काफ़ी confrontations हुआ है मेरा. तो काफ़ी confrontations हुए हैं मेरे, तो मैंने कहा प्लीज़ गिव मी प्रॉपर क्यू, नहीं देना मत दो, डोंट स्टैंड, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एडी लगा लोगे, मत खड़े रहो, बट जस्ट डोंट स्टैंड एंड लाइक डोंट यॉन इन फ्रंट ऑफ द लुकिंग एट माई फेस, यू नो. बॉलीवुड में पहले नहीं होता था, आजकल होने लगा है. It's so sad, you know. I'm coming from a time where, you know, we all would stand with each other. We all would try and give our best so that the सामने वाला कभी, see, acting is all about action reaction. Okay, आप जिस तरह से मुझे दोगे मैं उस पर react करूँगी. So if you, मुझे ऐसा लगता है कि it's so selfish to think that way, that मैं I don't want कि सामने वाला का acting अच्छा. Why are you that insecure about your craft कि तुम सामने वाले के acting से डर रहे हो, that you're not giving proper cues? Or, you know, you want to throw just because you know, you want to show that, oh, I am here and I want to, like, you know, सब खड़े हो जाएंगे फिर मैं खड़ी होंगी या मैं खड़ा होऊंगा.
तो वो मुझे बहुत आई फील इट्स सो चाइल्डिश, इट इज़ सो मुझे हंसी आती है, फिर इरिटेट भी होने लगती हूँ, फिर वापस हंसी आती है। जब इरिटेट होती हूँ तो 2 बातें सुना देती हूँ। Okay, last question for this. You made my day after answering. Last question for this: ki what next is in your pipeline? Are there a set of producers who are coming, knocking your door, approaching for different kind of roles या stereotype चीजें ही आ रही है? I'm still waiting for that one good knock, I would say. I'm still waiting. Yeah, I'm just still waiting that for that particular knock at my door that, you know, I said, okay, let's just do, let me just stop everything and let's just do this. Because when you start working, I have seen you just work. Yeah. You just work. You don't even care about hair है ये है. हाँ, वो तब मैं इरिटेट होती हूँ, मैं तो कितने बार मैंने कहा डोंट स्टैंड, अभी मुझे ऐसे ही लगना है, लगूंगी मैं ऐसे, आई एम नॉट सपोज टू डू माई मेकअप राइट नाउ, मेरा बच्चा मर रहा है, मैं वहाँ पर मेकअप नहीं करूँगी, तो मैं आई एम दैट काइंड ऑफ एक्टर. I don't care about my makeup, I don't care about my hair, and especially when I'm doing rehearsals, don't come anywhere in front of me, boss. When I'm doing my lines, I'm not doing my rehearsals. Stand up. मतलब कितने बार वो hairdresser को डाल देते. तो yeah, मैंने कहा don't do that. Don't irritate me when the director and me are talking, or my actors and me are talking, or doing my lines. वो बाल सब touch, वो all those are secondary for me. That is secondary for me. When I'm on set, I come with my lines. For me, acting is doing my acting in front of the camera. That's what is the most important thing for me. So I'm just waiting for that kind of role. Very good knock. I'm waiting for it. Thank you so much, ma'am. कैसा लगा टेलीचक्कर से बातचीत? बहुत अच्छा लगा. Every time, as always, बहुत हमेशा. You come up with something different questions, and I like that about Telechakar. Hi, this is Rinku Ghosh, and you're watching me on Telechakar.